Hello friends, please join your hands in welcoming Mr. Rahul Pal, the Chief Investment Officer, Mahindra Manulife Asset Management Company. He's a chartered accountant and has over 21 years of work experience. Prior to joining Mahindra Mutual Fund, he was with Sundaram Mutual Fund as a fund manager and post that with Taurus Mutual Funds as the head of fixed income security. So we welcome you to the show of Market Expert Series, sir. Thank you. Thank you, Rahul, for having me over here. You really make me sound very old when you tell 21 years, but so be it. This is the experience that shows up. I don't know that. Let my words speak for themselves. So, sir, taking this discussion forward, we all know debt is not a very well understood segment in the industry. So, it is our pleasure to have you here and help our viewers understand how debt is different from equity and what all factors to look at on the debt side. So, let me start with the first question. Everybody generally talks about equity markets, etc. Share price ऊपर नीचे जा रहे हैं, कैसे move हो रहे हैं. Do you think debt is really underrated as an asset class? Thank you. धन्यवाद ये question पूछने के लिए. So, no, debt is an actually over-invested asset, and it's the easiest asset to be understood. इससे सहज तो कुछ हो ही नहीं सकता है. यहाँ निवेश करोगे इतना मिलेगा वापस. ठीक है. इसमें uncertainty की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है. So, why do I tell you it's an over-invested asset? हिंदुस्तान में करीब 170 लाख करोड़ का डिपॉजिट है. उसमें से करीब 55% is invested by individuals. ये डेटा है. So that means 170 लाख करोड़ का 85 लाख करोड़ पकड़ लो इंडिविजुअल्स ने डिपॉजिट में किसी माध्यम से किया है, बैंकों में किया है. The second thing is you have small savings, एक और 15 लाख करोड़, mostly done by individuals. Okay, and then you add another provident fund. So total investments would be close to 115 odd lakh crores. So, and which is giving you an element of certainty in your return profile. So it's actually, yes, some may individuals investments in mutual fund is close to 4 lakh crore in debt. So okay, so they do invest. ऐसा नहीं है कि वो नहीं invest करते हैं, वो invest करते हैं. 4 lakh, if I'm not wrong, the last data is close to 4 lakh crore on the debt plus liquid, and you have 17 to 18 lakh crores individuals investing in equity. So that's a 75-25 proportion. Considering the fact that what they already have, it's a sizable proportion of an individual's investments in fixed income. ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, mutual fund के माध्यम से नहीं. That's the only difference. That's one. So that's one, and hence I think it's a pretty simple product, and people are already doing it, but not through the mutual fund wing. So for an existing mutual fund, when you look at it, the addressable market size is actually very large. It's not a small market size. That's one. In terms of the addressable market size and what you're looking at for the business per se, there are of course some taxation advantages in debt mutual fund. There's a bit of an arbitrage there if you invest for more than 3 years. B is now considering अभी आपने जो कहा है कि equity के साथ हमेशा ज्यादा equity के साथ चर्चा किया, and it is a well deserved चर्चा. ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं होना चाहिए निवेश की. The point is how do you measure an asset class? यार ये asset ने कितना दिया है मुझे? There's always a measurement of an asset class. So let's suppose, I mean, if you look at the data in the last 20-22 साल में, you can say the 5 साल का SIP average return equity करीब 11.5 बार. Average, you just calculate that average return, you'll get that answer across cycles. I'm not doing very specific, but that's the number. An average 5 year, there can be always deviations around it, but that's the average. Surprisingly, a gilt index, that's your safe haven, has also given you approx. So you take it or leave it. So I'm talking about again 2000 to 2022. I'm talking about large data cycle numbers. It will change as you go, as you move along, because in the first part of 2000 to 2000 was where interest rates were also relatively much higher than what you're witnessing in the second part of the decade. So for the volatility for the asset class, I mean, debt has a classical lower volatility, gilt volatility vis-a-vis and equity volatility. For the volatility, I believe debt has done okay. And it has done exactly what it is supposed to do. For an equity risk and for the risk that you're taking in a classical gilt as a product, you're getting compensated. Okay. So my whole thing is, are you getting compensated for the asset class in which you've invested? My answer is yes, in equity also, in debt also. It's just that we haven't told it that way. We look at it in terms of कितना return बना है. पर इस return को लेने के लिए आपने volatility भी दिया है. आपने रातों की नींद एक सोना, एक होता है ना कि रातों की नींद कितना मैं सोना चाहता हूँ, तो उस यदि 5 घंटे नींद के लिए जो रिटर्न चाहिए और 8 घंटे नींद के लिए जो रिटर्न चाहिए वो asset class ने दिया है. So my answers, I believe largely the answer is yes. So if I were to talk through this, I think the investor will understand that for the volatility or the more sleep well slept nights, the debt returns have compensated them. Okay, there have been, I'm looking at a broader market gilts. I'm not looking at credit specific, but I'm looking at gilts per se, just to give you the risk-free versus risk-on assets. That's what my perspective is. That's a very interesting insight, actually.
because the numbers actually speak a lot, but people have a thought process कि इक्विटी में डाला है तो ज्यादा ही रिटर्न बनेगा, डेट में तो कुछ बनेगा नहीं. तो ये numbers They actually जो do. आपने Because it has been captured in there's something called a risk premium. If you're taking a risk, it has to be compensated. And if you're investing in a classical risk-free asset, it has also to be compensated. Every asset class has its value for the risk that you take. People forget the question for the constraint, for the risk that you have taken, has the asset class delivered? So पहले ये पूछिए and then you seek the outcome. I think that's the most critical in asking. Everybody got to ask this question. प्रश्न हमेशा ये होना चाहिए, ये जोखिम के लिए मुझे ये रिटर्न मिला है कि? Absolutely, very well said, sir. So going forward on this, डेट फंड्स में क्या पैरामीटर्स देखने चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले एक इन्वेस्टर? सो एक तो इन्वेस्टर का खुद बिहेवियर होता है और खुद का लिक्विडिटी होता है. मुझे कितने साल के लिए निवेश करना पड़ता है और मैं कितना वॉलेटिलिटी सह सकता. दैट्स वन. बिकॉज़ एवरीबॉडी हैज एंड द अदर इज व्हाट इज हिज रिस्क प्रोफाइल. कितना तक जोखिम वो ले सकता है. डेट में भी काफी देयर हैज बीन कैटेगरी ऑफ रिस्क both in the credit and the interest rate. What is the individual's own risk appetite? He has to define it. And then there are funds for it. That's one. So ऐसा नहीं है कि it's an unconstrained. If the individual investor or the institutional investor has defined the risk profile, there is a classified fund for it. So that's one. There is a liquidity profile of the investor. कितने दिनों में पैसे चाहिए? There's also a fund for it. There's also volatility profile. कितना volatile चाहिए आपको? कम वॉलेटिलिटी होगा तो आपके लिए इस तरह के फंड, आपके पास वो फंड के निवेश कर सकते हैं. ज्यादा वॉलेटिलिटी के आपको अलग फंड के लिए निवेश कर सकते हो. And in terms of mutual fund selection, there are two aspects. One is the individual aspect, one is the mutual fund selection aspect. How do you go about selecting an investment manager? A large unfortunate part is looking through the past performances. That's unfortunately that's the way looking at it. But beyond that, you got to look at the process. What is his thoughts when he invests in the asset or the securities or a company? You got to look at through it. Is the portfolio liquid? That is, if his portfolio is liquid, I don't have a constraint on liquidity. I will get out as I wanted. So to sum it all, one is the individuals themselves have to determine, because there's always a fund for it. And in selecting a fund house, I would appreciate if investors start looking at more than carry or YTM or performance, how liquid that guy is. And am I being compensated for and if it's an illiquid premium to it, am I being compensated for the illiquidity in the fund? Very, very simple profile. Liquidity, volatility, and of course आपका क्या requirement है उसके हिसाब से आपको decide करना चाहिए कौन से डेट फंड्स में आपका रिस्क आप कितना जोखिम लेना चाहते हो उसके लिए. जोखिम सबसे जोखिम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. तो लोगों को ये नहीं पता है कि डेट में भी जोखिम हो सकता है, और हायर रिटर्न्स के लिए कभी कभी लोग ये समझ लेते हैं कि अगर मैंने हाई रिस्क में लिया लेकिन डेट तो सेफ ही है. वो एक्चुअली नहीं है ट्रू. डेट में भी जोखिम हो सकता है, जैसा कि आपने भी बताया. और इसी पे अगर हम आगे बात करें, कुछ फंड्स थे, कुछ कंपनीज थे जो पहले डिफॉल्ट कर चुके हैं. आयरलैंड एफएस था, डीएचएफएल ने किया, यस बैंक ने 81 बॉन्ड्स पे डिफॉल्ट किया. सो व्हाट आर द when purchasing debt securities as a chief investment officer for fixed income, आप क्या फैक्टर्स देखते हैं कि इन्वेस्टर का ट्रस्ट सेफगार्ड हो और रिटर्न्स भी अच्छे बने? आप बैलेंस कैसे बनाएंगे दोनों का? One is the only reason that people give you money is largely also trust. Because we have a fiduciary relationship, we have to do almost equal to a job as if we are investing your own money. I mean, you have to be that element of carefulness. So there's a huge implicit trust when you manage others' money. There is no two ways about it. You have to invest. The fund manager, whosoever manages money, has to be aware that there's a huge trust placed on him. That's one. And hence there's a fund manager's individual decision making process, and there's a process driven process. I mean, there's a process also behind it. The two of them also should merge in terms of his behavior and a process. Third is in terms of looking for issuers. We managed to escape all landmines. There is a very classical way of looking at investments, and which also says the fact that you cannot be investing in equity or debt. For any asset class, if you are not so sure whether that will survive. So look through it in a similar lens. There's nothing called equity के लिए अलग देखा जाए, debt के लिए अलग देखा जाए. ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप निवेश तो धंधे में कर रहे हो, business में कर रहे हो. And there should be the same parameter. That's one. So what we do look at is these are very classical things: quality of management, quality of business, quality of financials. And then you start looking beyond the obvious, whether the balance sheets look good, whether the balance sheets are clean. So what we escaped
is also there's something called which is called the art of skepticism, which is आप एक बहुत look at every piece of financials and business with the idea that is it an over optimistic situation or is it an are we people talk about over it's or is it an over pessimism, पर आपका जिसे हम हिंदी में कहते हैं संदेहवाद है, पर एक्सेस मतलब ये जीवन के लिए नहीं करना चाहिए, बट आप जब निवेश या धंधा कर रहे हो बिजनेसेस देख रहे हो एक हमेशा एक जिसे हम कहते हैं एक संदेह की नजर से देखिए कि if are things right, and संदेह is not pessimism, संदेह is asking the question, looking through every aspect of the balance sheet and financial with a sense of carefulness and a very asking mind, क्योंकि हमेशा ये सवाल पूछना चाहिए ऐसा क्यों हुआ, क्यों पूछने से कभी भी घबराइए मत। मतलब लेट मी गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल कि कोई भी एनबीएफसी, लेट्स सपोज दिस एन एनबीएफसी which has a very which advertises heavily, let's suppose, you know, and they use some brand ambassadors, you got to ask yourself if one is using a brand ambassador, the other is not using, why? कभी भी क्यों पूछने से संकोच मत कीजिएगा निवेश में। मैं एज अ फंड मैनेजर कभी भी हम लोग कोई निवेश करते हैं हम लोग हमेशा क्यों पूछते हैं, एक you always write down what works, what doesn't work, and also ask the why. The why is very important. Why is he doing that? Is it something that is business or that's something beyond business? Keep on asking yourself this question. कभी भी क्यों पूछने से मत कतराइए जब मैं निवेश करता हूँ। हाँ जी। तो ये फंड मैनेजर के लिए बहुत जरूरी है कि क्यों पूछने से ना घबराएं, और इन्वेस्टर के लिए भी बहुत जरूरी है कि सवाल पूछें और फिर इन्वेस्ट करें, समझ के इन्वेस्ट करें। जी हाँ। So great answer and very well said. Coming on to the next question, a notion that people have is investors को लगता है rate hikes are only linked to inflation. How true is that? ज्यादा तो सही है। कहीं भी महंगाई बढ़ता है और ब्याज नीचे जाता है ऐसा होता नहीं है। बहुत मुश्किल है ये सोचना, एटलीस्ट मुझे सोचने में ये बड़ा मुश्किल होता है कि महंगाई ऊपर जा रहा है और ब्याज का दर नीचे जा रहा है। ये एटलीस्ट मैंने तो देखा है कि ऐसा होता है। सो ये लाजमी है कि ऐसा सोचना और ऐसा होना भी चाहिए, नहीं तो आप वो ब्याज के लिए आप कंपनसेट क्या आप ये जो आप महंगाई के लिए कंपनसेट कैसे हो गया। सो इट अल्टीमेटली लीड्स टू अ राइजिंग रेट्स। कहीं लीड एंड लैग हो सकता है, पर ज्यादातर समय में आपको जो महंगाई का दर को कंपनसेट करने के लिए या तो वो इक्वल रहेगा या थोड़ा ज्यादा रहेगा, ये होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। तो सर इसी में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, एक सवाल पूछना चाहूंगा आपसे कि जैसा कि हमने देखा है इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, 3 बार बढ़ा चुका है आरबीआई, इंटरनेशनली भी ग्लोबली भी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं, इन्फ्लेशन है, तो आपको क्या लगता है ये इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स का पीक कहाँ पर आके खत्म होना चाहिए, एंड इंडिया पे कितना इम्पैक्ट होगा ग्लोबल इन्फ्लेशन का? देखिए इसका एक बहुत इजी आंसर भी है, बड़ा डिफिकल्ट आंसर भी है। द आंसर इज आई डोंट नो, मुझे मालूम नहीं है, यही सबसे सच है। सो ये बोलने में भी उतना ही मुश्किल लगता है कि अपेरेंटली हमें बोलना चाहिए कि हमें ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर ये सबसे इजी सवाल है। जब ये आप ये आंसर करोगे तब आपको मालूम चलेगा कि बोलने में कितना डिफिकल्ट है। इतना इजी उत्तर बोलना बड़ा डिफिकल्ट होता है, दैट्स वन। बी इज आप पीक कैसे आप पीक कैसे, हाउ डू यू नो दैट इट इज द पीक। तो हमें लगता है कि हमें शायद पीक हो चुका है, एक उत्तर। और ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि देखिए जो मैं बड़ा सिंपल सा चीज बोलना चाहता हूँ कि आज एक साल का जीसे का रेट 6.30 है, 2 साल का करीब 6.75 है। तो जो इसका अर्थ ये होता है मार्केट के अनुसार एक साल के बाद एक साल का रेट 7.20 होना चाहिए। ये मार्केट का, यदि आप बोलोगे यही मानना है, और हम ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन 7% है। ये बड़ा मुश्किल है सोचना। यदि आप मान के चलोगे 5.5 या 6% है, तो एक्चुअली निवेशक अभी पैसा बनाने लग गए हैं एक साल के बाद। ये होगा कि नहीं है हमें मालूम नहीं है, पर एट दिस मोमेंट ये बताया जा रहा है कर। तो इसीलिए हमें लगता है कि जब ऐसा होता है तब करीब आप पीक के नजदीक रहते हो। देखिए पीक बड़ा मुश्किल है, पर इन आंकड़ों की वजह से हमें लगता है कि हम लोग करीब पीक पे आ चुके हैं, क्योंकि बाजार हमेशा आरबीआई से आगे चलता है। हमेशा ये कोई भी मार्केट, कोई भी सेंट्रल बैंकर से कोशिश करता है कि वो आगे रहे, बोथ ऑन द अपर साइड और ऑन द साइड। तो हमें लगता है कि करीब हम पीक के पहुंच चुके होंगे या ऑन द लास्ट फेज। ग्रेट सर। सो जैसा कि आपने बताया, सही बात है, आई डोंट नो इज द बेस्ट आंसर। ऑफ कोर्स आपको लगता है कि शायद पीक आ गया है या थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा, और 7.20 पे हम लोग देखते हैं गोइंग फॉरवर्ड। तो यहाँ से डेट का मार्केट और रिटर्न्स भी शायद बनने लगेंगे अगले 3 से 5 साल में इन्वेस्टर्स का। तो इसी में अगर हम पूछें कि अगर इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना है और किसी को थोड़ा इक्विटी और डेट का कॉम्बिनेशन लेना है, तो क्या उसे बैलेंस्ड फंड्स लेने चाहिए या फिर उसे सेपरेटली इक्विटी और डेट फंड्स अलग अलग उतने रेशियो में ले लेने चाहिए? देखिए बैलेंस फंड्स का एक एडवांटेज टैक्सेशन पे रहता है। जो आप अलग अलग रे करोगे तो एक टैक्सेशन का उनके तरफ एडवांटेज नहीं रहता। तो मैं 3 साल के बाद शायद एक टैक्सेशन इक्वलाइजेशन होगा, बट लेकिन ऑन द स्टार्ट ऑफ इट अभी 1-2 साल के लिए बात करोगे तो इट इज नॉट इन फेवर ऑफ द इन्वेस्टर, कि ये 2 साल का टैक्सेशन इन डेट इज नॉट फेवरेबल फॉर द इन्वेस्टर एट दिस मोमेंट, दैट्स ऑल। देखिए मेरा मानना है कि क्योंकि ये म्यूचुअल फंड के पास क्यों होना चाहिए, क्योंकि
एलोकेशन, यदि आपका कोई इन्वेस्टर का यदि कोई रूल होता है दैट रियली हेल्प्स कि मैं 50-50 करके रखूंगा और बैलेंस करते रहूंगा 3 साल बाद, या दैट्स वन। और एल्स यू डिपेंड कि यार फंड हाउस कुछ कर पाए कि वो अपने आप बैलेंस कर पाए या एक फिक्स प्रोपोर्शन पे रख पाए। पर मुझे क्यों लगता है कि ये डिसीजन जो इन्वेस्टर कर सकते हैं अपने, वो खुद कर सकते हैं, नो, और या तो एडवाइजर की वजह से भी वो मदद से कर सकते हैं, और एल्स यू जस्ट गिव द फंड्स टू द फंड मैनेजर टू डिसाइड कि क्या होना चाहिए बैलेंस, एंड इट्स एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स चॉइस अपॉन हिज, वो कितना समझते हैं बाजार में। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे इतना नहीं समझ में आता है तो मैं एडवाइजर का मदद लूंगा, और फिर एडवाइजर आपका, देन एडवाइजर विल प्रॉब्ली हेल्प यू इन डिसाइडिंग वेदर हाउ टू स्ट्रक्चर हिज पोर्टफोलियो और लुक थ्रू अ म्यूचुअल फंड। इतना ही मैं जानना चाहता, इतना ही मेरा समझ है। ओह ग्रेट सर। तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं उनको इतना नहीं सोचना चाहिए, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो लीव इट टू द एक्सपर्टीज ऑफ द फंड हाउस। एटलीस्ट फंड मैनेजर और रिसर्च टीम है, दे विल कीप रीबैलेंसिंग, और कम से कम जी आपका हाँ, रेशियो मेंटेन रहेगा, रिस्क मैनेज जी रहेगी। हाँ, तो जी इसी हाँ। में अगर एक सवाल पूछें कि अगले 5 साल के लिए कोई इन्वेस्टर अगर इन्वेस्ट करना चाहे, मॉडरेट रिस्क एपेटाइट का इन्वेस्टर है, तो उसको क्या प्रोडक्ट मिक्स रखना चाहिए इक्विटी और डेट में? देखिए, यदि वो, मेरे मुताबिक देयर इज नो वन करेक्ट आंसर। कोई एक सच के लिए एक सच कभी नहीं होता है ना, और एक समाधान कभी नहीं होता। हर निवेशक का अलग एक होता है, जोखिम होता है, रिस्क एपेटाइट होता है। तो फिर भी आप 5 साल के देखिएगा, तो मुझे क्यों लगता है कि जो बैलेंस स्कीम्स है, यू कैन बी एनीवेयर, ओके। सो म्यूचुअल फंड एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड भी होता है, जो डेट की तरफ जो ज्यादा जाते हैं, या एक नॉर्मल इक्विटी हाइब्रिड स्कीम होता है जो 75% इक्विटी होता है। सो ये निवेशक पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट है, निवेशक पे डिपेंड करेगा कि वो कितना रिस्क एपेटाइट है, और 50-50 का भी प्रोडक्ट है। सो ये इन्वेस्टर पे, निवेशक पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह का जोखिम लेना चाहते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड के पास वो पूरा प्रोडक्ट सूट है उनके लिए बैलेंस स्कीम के थ्रू। तो इसलिए डिपेंडिंग ऑन द इन्वेस्टर ही कैन चूज। But if it is a 5-year product, even if I'm a dead guy, I would still think you should have a largely equity hybrid, if that's not a balanced advantage, because that over a period of 5 years, that helps him becoming better risk adjusted returns. ओके, सो अगर जनरली टैक्स पर्पस से भी देखें तो इक्विटी हाइब्रिड विल प्रोबेबली मेक मोर सेंस विद द 5 year horizon, With it, and with returns a, will also be justified because it has a combination of 65% plus equity yes, and roughly 25 to 30% debt. absolutely. बिल्कुल जी सर। हाँ, बिकॉज हमेशा निवेश आपको ये समझना है कि 5 साल 10 साल, यदि इस तरह सोचिएगा तो देयर इज ऑलवेज एडवांटेज फॉर इक्विटी विद अ हाइब्रिड स्कीम, हमेशा जी। ओके सर। Okay, great, sir. So now, sir, one important question about Mahindra Manulife म्यूचुअल फंड के पास बहुत सारे प्रोडक्ट मिक्सेस हैं, बट फिर भी कुछ कैटेगरीज मिसिंग है, जैसे क्रेडिट रिस्क फंड नहीं है, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड नहीं है, गिल्ट नहीं है। सो क्या आपको लगता है कि ये प्रोडक्ट मिक्स अभी जो है वो सफिशिएंट है, या हम नियर फ्यूचर में और ये बॉन्ड वाले फंड या डेट फंड्स देखेंगे, क्योंकि पॉजिटिविटी आने लगेगी मार्केट में? ऑल्सो, where should an aggressive investor park his funds in the debt side now? If somebody is aggressive on debt, he does not want to take market exposure, वो लेना चाहता है, उसमें आपको क्या लगता है? So, one is, thank you for asking the question. I think we have completed a large part of our equity product suite. Now we are also focusing on the fixed income career, और हम लोग ऐसा product भी लाएंगे which will fulfill the entire product appetite, product boutique. That's ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं लाएंगे. That's one. And thank you for asking that. In the future, you will see also that happening. B is, in order, let's suppose थोड़ा ज़्यादा risk appetite लेना चाहते हैं. I believe in the industry there's a beautiful category called conservative hybrid, which also has close, probably हमारे पास अभी नहीं है, but on an average the industry has close to between 75 to 80% debt है, 20% equity है, which is also a good category if the fund manager in his conservative hybrid is also manages the debt in a very active fashion. That's one. It's not a very I mean, it's not a fund which invests in the shorter end of the curve. It's a fund, a debt fund, which is supposed to behave like one. B is only in a pure play debt fund. I would rather go for dynamic bond funds at this moment. Short-term funds or dynamic bond funds. These two categories. Sure, yes. Short-term or dynamic bond funds. And if he wants a bit of a debt भी रहे और मुझे थोड़ा सा इक्विटी में भी फ्लेवर मिले, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड इज कंजर्वेटिव हाइब्रिड। गुड फंड। So great, sir. That these things were very insightful. And आखिरी सवाल पूछूंगा कि आपकी इन्वेस्टर्स के लिए क्या राय होगी? A difficult one, but know yourself. ग्रेट, सो वेरी शॉर्ट, एंड आपने बहुत शॉर्ट कंसाइज करके बहुत कुछ बोल दिया इस जवाब में। थैंक यू सर, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू हियर, एंड The थैंक्स अ pleasure लॉट is. फॉर taking out time for us, sir. So thanks a lot, sir. Thank you, Rahul, for having Mahindra Manulife over, and we do hope that we're able to fulfill every investor aspiration. Thank you. Absolutely, sir. So Mahindra has been a trusted brand. It will continue to do so. And with you on board and such fund managers on board, I'm sure it will do well, sir. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot. Thank you. And thank you, friends, for watching. And we'll keep you updated and be back with more such interesting interviews.
Thanks a lot, and thanks a lot, Rahul sir, again for taking out time.